Hello students, let's start our English class. Today again we are here with the poem The Voice of the Rain, and yesterday I told you I will tell you about the devices used in this poem. So last time in last class also I have told you the device is used in this poem is personification. Yes, we have seen the personification very nicely in that poem. Personification means I. अब personification इसमें क्या है? See here in the first paragraph, I क्या है? I is the rain and the voice of the rain. Rain has been personified by the voice of the rain. Means उसको compare किया जा रहा है voice of the rain के साथ. वॉइस ऑफ द रेन के साथ किसको कंपेयर किया जा रहा है? रेन को. ठीक है ना, रेन की वॉइस को, रेन ड्रॉप्स को. ओके, सो दिस इज personification. And now second device is used as that is alliteration. Alliteration means repetition of consonant sound. कॉन्सोनेंट साउंड की रेपिटेशन जब होती है तो उसे बोलते हैं एलिट्रेशन. सी हियर इन द सेंटेंस soft falling shower. Soft falling shower, where is it is? See here in the soft falling shower in the first line. See here in the first line is used as soft falling shower. Soft means soft, s both sss is used again and again, that's why it is alliteration here. Soft falling shower. And again see here to tell, second line में टू टेल, टी दोनों साउंड साथ के साथ आ रही है. सो हेयर इज़ द वर्ड एलिट्रेशन. एलिट्रेशन इज़ यूज वेन एवर देर इज़ अ कॉन्सोनेंट साउंड यूज अगेन एंड अगेन, दैट इज़ कॉल्ड अ रिपीटेशन साउंड कम्स ऑफ कॉन्सोनेंट, दैट इज़ कॉल्ड एलिट्रेशन. नाउ सी द इमेजरी. इमेजरी इज़ वॉट? इमेजरी इज़ अ वर्ड और एडजेक्टिव दैट विजुअल इमेजिनेशन, जिससे विजुअल इमेजिनेशन होती है. लाइक सॉफ्ट फॉलिंग शार. अब सॉफ्ट फॉलिंग शार जैसे कि शार से कंपेयर किया है किसको? रेन ड्रॉप्स को. सो दिस इज़ अ इमेजिनेशन की ऑफ लाइक जैसे शार की बूंदें गिरती हैं वैसे ही रेन ड्रॉप्स गिर रही हैं. देर इज़ अ विजुअल इमेजिनेशन जो कि हमें विजुअल इमेजिनेशन दर्शाई गई है. दिस इज़ कॉल्ड इमेजरी हेयर. Now next is metaphor. Metaphor is what? Metaphor is comparing qualities of two things. When we compare qualities of two things is called metaphor. Like see here, metaphor इसमें third line में है poem of earth. See in the poem of earth. Poem of earth, here rain is rain को compare किया जा रहा है किससे? poem से. ठीक है, poem of earth से rain को कंपेयर किया जा रहा है. वेन एवर वी आर कंपेयरिंग विथ टू थिंग्स, like we tell the qualities of two things, comparing the qualities of two things is called metaphor. Okay, now see the hyperbola. One more device is there, that is hyperbola. Hyperbola means बढ़ा चढ़ाकर जब हम किसी बात को बोलते हैं, that is called hyperbola. See here we are mentioning here the bottomless sea. See in the first, second, third, fourth line. Fourth line we have that is written over here, bottomless sea means sea को bottomless बताया गया है, like बढ़ा चढ़ा के उसे बताया गया है. So that is the word bottomless sea is word that tells the hyperbola device. Now next, in the next paragraph, अगर हम next paragraph को देखें तो I descend to lave the draughts. I descend to lave the draughts. Atom is dust layers of the globe. See here in this paragraph consonants. See, here the consonant device is used when one line and one line is spread. See the second paragraph. In this second paragraph one more device is used that is consonants. Consonants is what? When one line कॉन्सोनेंट साउंड इज़ प्रोमिनेंट. जब एक लाइन में कॉन्सोनेंट साउंड प्रोमिनेंट होती है, मीन्स बार बार यूज़ होती है, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स. सी हियर डिसेंट, ड साउंड इज़ यूजिंग हेयर. देन ड्रॉट्स, डस्ट, ड साउंड इज़ यूजिंग in the first line, and in the second line also that, the, them,
and without these sounds are repeating again and again, consonant sound. So see here in the last line also, racket or unracket, again racket, r sound, then returns r sound, again consonant sound is repeating. So this is the consonants. One more device is there in the second paragraph, that is anaphora. Anaphora is what? When more than two consecutive lines start with a line start with, ठीक है, more than two, when more than two consecutive lines start with a word, with a sound word, that is and see here in this paragraphs, and बार बार लाइन में यूज़ हुआ है, that is called anaphora. इसको हम anaphora कहते हैं, ठीक है. So at last I can say that this poem is written in a free words. मतलब इसमें कोई भी ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं हुए हैं. फ्रीली जो पोएट है उन्होंने फ्री वर्ड्स यूज़ किए हैं अपनी एक्सप्लेनेशन देने के लिए. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आर today our class is up to here, and this poem has completed the voice of the rain. And what you have to do, you have to do the question answers. Thank you. Have a nice